A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic of discussion in this session is the use of symbolism in the novel Twilight in Delhi. Dear students, introduction to the question. A writer has many devices at his disposal to make his message clear to the readers. If he cannot say something directly, he uses metaphorical clues, symbolic words and phrases, comparisons and contrasts, metaphors and similes. Indeed, Ahmad Ali has made use of symbolism implicitly as well as explicitly in the novel here. Through symbolism, Ahmad Ali strikes superstitious beliefs, ups and downs of life, culture, colonialism, and history itself. We see history in the background, culture on the forefront, and the life story of Mir Nihal and his family being representative of Muslim middle class at the core of the novel. If Ahmad Ali has given description of every object, it is not over description. Instead, it refers to something. Symbolically, it means something. For instance, Hina tree has unique symbol. Asgar's clothes indicate acceptance of new values. Mir Nihal's life also gives a message in hidden meanings. Thus, each object, every character and incident and happening and event of the story point to something important. Symbolically, they have another meaning hidden other than their literal outward meaning. अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है कि राइटर्स जो हैं जब वो तहरीर के अंदर जो है अपने मैसेज को बाज़ औक़ात जो है छुपा कर अपने रीडर तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्लोथड इन शेप ऑफ सिम्बोलिज़म और मेटाफोरिकल एलूजन्स यू मे से। तो ये जो क्लोथिंग है इसको हम सिम्बोलिज़म का नाम देते हैं। तो ये कॉमन इनफ टेक्निक है जो ख़ुसूसन लॉन्गर वर्जन ऑफ स्टोरी राइटिंग नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में हमें जो है वो आम दिखाई देती है। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो टूल्स राइटर जो है वो इस्तेमाल करता है। इस कहानी के अंदर जो मेन स्ट्रिंग है आपको पता है वो एक लव स्टोरी है असगर की, उसके बाप के साथ उसकी कन्फ्रंटेशन, लेकिन उसके साथ साथ जो साइड लाइंस पर जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, जो सिंबल्स हैं, वो अहमद अली ने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत दीगर जो हैं अपने थीम, अपने मैसेजेस को रीडर्स तक जो है वो कन्वे किया है। तो उसमें उसने एक्सप्लॉइट किया है तकरीबन हर चीज़ को, डिस्क्रिप्शन मोड को भी और साथ में नरेशन को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो हेयर एंड देयर यू विल फाइंड a lot many symbols, a lot many things। जैसे सिर्फ इब्तदा में यहाँ सिर्फ एक मिसाल दी गई है कि ये हिना ट्री जो है देखें वो एक बड़ा ही यूनिक किस्म का सिंबल है जिसे राइटर ने एक्सप्लॉइट किया है। फिर पाम ट्री जो है आपको पता है वो एक बेहद भरपूर सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। तो जब ओपनिंग होती है नावल की तो दैट इज़ वेरी फ्रेश, leaves are very fresh, glossy, glittering, in a happy mood, rather the tree, spring is all over it। लेकिन जैसे जैसे डिटोरेशन राइटर शो करता है कल्चर की तो इसके भी पतझड़ आ जाती है इस दरख्त पर भी, और पाम ट्री जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं पत्ते, और ख़ज़ां ऑटम उस पर जो है सुपरसीड करती चली जाती है। तो ये बेटे सिंबल्स का इस्तेमाल जो है इस नावल के अंदर, इस सवाल के इस तनकीदी सवाल में हम इसका जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से किरदार जो हैं वो क्या अलामती अहमियत रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन अ प्रीवियस क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन, दैट द टाइटल ऑफ दिस नावल इज़ वेरी symbolical, Twilight in itself. The title of the novel is symbolical in nature. It refers to decay, destruction, and the dark night of imperialism,
which is impeding, which has overshadowed the golden Muslim era and civilization. It is really the twilight of age old traditions, the family system, the norms, the lifestyle, and the values of society. Everything is at the verge of collapse, suggestive of the deterioration and decay of a set pattern of life and the emergence of a new world out of this chaos that is happening with the locals here. बेटे जो पहला सिंबल है, जैसे हम इस पर बड़ी डिटेल से शुरू में बात कर चुके हैं एक सवाल में, तनकीदी सवाल में, कि इस नावल का जो टाइटल है, उन्वान है, वो बजाते खुद जो है एक बहुत बड़ा सिंबल है और बहुत से मानी कन्वे करता है. सिर्फ एक डेके और डिस्ट्रक्शन ही को शो नहीं करता, एम्बिग्विटी को भी शो करता है और भी बहुत तेज मानी जो हैं इसके अंदर पोशीदा हैं. बहुत से असरार इस एक ट्वाइलाइट के लफ्ज़ के ज़रिए से राइटर ने हम तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है. और ये ट्वाइलाइट जो है वो थ्रू आउट द नावल जो है वो परमिएट करती है और इस पर हमें नज़र रखना पड़ती है. The second major thing is the descriptive symbolism the writer has made use of in the writing. The opening description especially has a symbolic significance. It shows the down-to-earth life of the Indians, the decay of Muslim civilization, the darkness in the minds or in the whole of their lives, which on a literal way or literal level is the product of their own inefficiencies and mismanagements and drawbacks of their own. All deserted and desolate conditions of men and their surroundings show the miserable plight of the people under the colonial rule, a poignant tale of a nation's downfall. This description is symbolic of the destruction of the culture people had cherished for so long a time. Night envelops the city, a few lines out of the text, covering it like a blanket. In the dim starlight, roofs and houses and by-lanes lie asleep, wrapped in a restless slumber, breathing heavily as the heat becomes oppressive or shoots through the body like pain. In the courtyards, on the roofs, in the by-lanes, on the roads, men sleep on brave beds, half naked, tired after the sore day's labor. तो बेटे ये जो description of the events, description of the happenings, description of the characters है, उसको इस्तेमाल में लाते हुए सिम्बोलिज़म का सहारा लिया गया है. यहाँ वहाँ जो है आपको ख़ुसूसन इब्तदाई हिस्सों में जो पार्ट 1 है नावल का, उसमें जो है बड़ी खूबसूरती से जो मेन मैसेज है डिस्क्रिप्शन के ज़रिए उसको हम तक कन्वे कर दिया गया है, डिटोरेशन का, डेके का, और ये इसी तरह से मुस्लिम कल्चर का डाउनफॉल जो है. और साथ साथ जैसे जैसे ये डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ती चली जाती है तो इसमें मज़ीद सिंबल्स जो हैं उन्हें बड़े निखार के साथ जो है वो पेश किया गया है. And dear students, then coming on to the next point, as we have already noted in our introduction to the question, palm tree has also been used as a symbol in the novel. For instance, palm tree in the start of the novel is green and its leaves have freshness in it, but at the end we see no leaves on the tree at all. The unsullied condition of the tree indicates freshness of life and the status of a flourished culture. But at the end of the novel, its horrible condition reveals the ruination of life and culture. How change affects the environment. It is shown through the technique of symbolism which is attached to this tree specially. First, it was a symbol of springtime, the springtime of the Muslim culture, the Muslim political sovereignty, and then the downfall at the end, its deterioration and decay. तो बेटे ये सिंबल जो है पाम ट्री का, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं. इसको राइटर ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है.
And dear students, then coming on to the main characters of the novel, although some other characters are also very symbolical, especially the characters of the girls to whom the father and son are attached, बबन जान, मुश्तरी बाई, ये सारे जो हैं सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, माइनर करेक्टर्स भी। लेकिन हम यहाँ सवाल की तवालत से बचने के लिए हम जो मेजर करेक्टर्स हैं उनके जो सिंबॉलिक मीनिंग है सिर्फ उन तक अपने आप को महदूद करेंगे। तो पहले बात करते हैं असगर के करेक्टर पर। अब आप पढ़ चुके हैं, पहले ये सवाल को देख चुके हैं, तो अब हम ज़रा इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के एक दो नकात जो हैं वो नोट करते हैं। असगर्स करेक्टर seemed disillusioned, a typical Indian Muslim bachelor who was not sexually satiated and spent life without any prior aim of life, aimless, directionless, confused personality. His approach seemed unrealistic of the concoctions like in part 1, chapter 1, 2, when he thought about Wilkes. His heart begins to beat and he follows her until he overtakes her and arm in arm they go. But soon the road comes to an end and in front there is a void, deep and dark and dim as he looks its abysmal depth. His head begins to reel and beads of perspiration came upon his brow. These are the feelings of a frustrated soul when he thinks of dying. अगर उसे वो जैसे सोचता है एक किरदार के तौर पर कि अगर मैं इस शादी में कामयाब ना हुआ, इफ़ शी इज़ नॉट माइन आई विल डाई, तो इससे बेहतर है मौत आ जाए। बार बार इशार की सूरत में आपको पता है इशार को एक्सप्लॉइट करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार करता रहे। तो आपने समरी देखी हुई है, इसके किरदार का भी आप मुताला कर चुके हैं। तो असगर का करैक्टर बेटे जो है वो राइटर ने उसे एक सिंबल के तौर पर जो है वो हमारे सामने पेश किया है। अगरचे इसके किरदार की और भी जीते हैं कि ये न्यूनेस के सिंबल के तौर पर भी है, एक चैलेंजर के सिंबल के तौर पर भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक फ्रस्ट्रेटेड सोल और डिवाइडेड पर्सनैलिटी, जिसे आप कहेंगे डिवाइडेड पर्सनैलिटी, एक हाइब्रिड कल्चर के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके करैक्टर के वो सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। यहाँ एक छोटा सा ऐसे टेक्स्ट में से टुकड़ा दे दिया गया है वजाहत के लिए, वरना और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके करैक्टर की सिंबलिज़म को ओपन अप करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द करैक्टर्स symbolic significance, let's have a look at the upcoming lines. The character of Asghar symbolically represents the whole trading Muslim generation who desperately wanted something clear, as everything was ambiguous, unclear before them, because they were in a hodgepodge of Indian and British culture. That is hodgepodge. In spite of his disillusionment, he is not able to foresee the coming circumstances, and it also shows uncertainty all around and nihilistic attitude on his part, because he had not the courage to make a change, to accept a change completely and wholly. Although Ahmad Ali has tried to convey the impact of change and transition through this character, yet his fluctuations in action and thought make him indecisive in everything. He symbolically stands as a challenge to authority with his antagonistic and rebellious attitude to his father and past traditions of family and society at large. बेटे, ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं और इसके करैक्टर रीडिंग में भी हमने, जब हम इसकी करैक्टर असेसमेंट कर रहे थे पिछले एक तनकीदी सवाल में, तो वहाँ भी इस पर तफसीली बात हुई है। तो असगर का करैक्टर मुख्तलिफ सिंबल्स को जो है वो डिपिक्ट करता हुआ दिखाई देता है हमें, ना सिर्फ हाइब्रिड कल्चर को, अपने एक फ्लक्चुएशन जैसे नौजवान नई नस्ल में पाई जाती है, फ्लक्चुएशन इन थॉट एंड एक्शन, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। फिर चेंज का भी सिंबल है, ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, एक चैलेंजर के तौर पर सामने आता है। लेकिन ही इज़ अ वीक करैक्टर जस्ट लाइक हिज फादर हिमसेल्फ। अपने बाप के किरदार की तरह से वो भी एक कमज़ोर किरदार का मालिक नौजवान है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विदन, although he looks very strong outwardly, beautiful, good looking, बंका से जीला नौजवान है ज़ाहिरी तौर पर,
لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ اوپر سے ڈینڈی ہے، ڈینڈی بنکا سے جیلا سا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ ایک ویک کردار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. Dear students, here the conversation about the character of Asghar continues, but comes to the conclusion. The character of Asghar Ali is the symbol of new generation, a generation which accepts change and does not resist before it at all. He likes his own culture, but also the English culture as well, due to which culture becomes hybrid. He wears English clothes. Mir Nihal rebukes him because he cannot bear English invasion. As compared to him, his son likes it. Asghar Ali indicates a generation which wants change at any cost. It loves the British people first, won the mind of the people, and then physically defeated them. The character of Asghar is in an example that Muslims open-heartedly accepted the colonialism, and when they realized that they had committed a mistake, it was too late for them to mend and to react. Indeed. مسلمانوں نے پہلے تو اس تبدیلی کو جو ہے وہ بادل ناخواستہ لوکلز نے قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہیں انگریزوں کے ہتھ کنڈوں کا پتہ چلا کہ یہ تو بھئی ہمارے نہ صرف مال و اسباب پر قابض ہو گئے ہیں، ہمارا ذریعہ معاش ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دولت جو ہے وہ یہاں سے وہ کنفسکیٹ کر کے یہ برطانیہ شفٹ کر رہے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے، پھر انہیں یہ بھی دکھنا شروع ہو گیا کہ یہ آہستہ آہستہ ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارا کلچر اس کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن اٹ واز ٹو لیٹ ٹو مینڈ، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو نوجوانوں نے جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس تبدیلی کو جو ہے وہ خوش دلی سے اوپن ہارٹیڈلی اوپن آرمز جو ہے وہ قبول کر لیا. جو عمر رسیدہ تھوڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اس تبدیلی کے کو قبول نہ کر سکے دلی طور پر اور ریزسٹ کرتے رہے. تو یہ سمبولزم جو ہے اس کے کردار کی وہ بھی ہمارے سامنے رائٹر نے رکھی ہے. Dear students, then comes the main character of the novel, Mir Nihal, and other characters of his family, which have been portrayed here in the novel symbolically by the writer. Mir Nihal's family is an embodiment and vivid picture of the Indian Muslims who had spent the same type of linings from many centuries. Their skeptic approach, religious atmosphere at home, around them, belief on customs and traditions, and superstitions, especially superstitious thinking, all can be packed by Ahmad Ali in one family death of Mir Nihal's pigeons. The chapter in which we come to know about death of Mir Nihal's pigeons is highly symbolical. It was turning point in Mir Nihal's life. A healthy, tall and handsome person turned into the weakest person in a single stroke of the pen by the writer in the world. The whole episode symbolically foretells the defeat of a certain traditional way of life which showed the static side of Muslim world life. The habit of keeping pigeons was old. Nobody thought about it that time. So Mir Nihal had to adopt the change, but he didn't comprehend the reality or the modern standards. بیٹے میر نہال آپ کو پتہ ہے ہمارا مرکزی کردار ہے اس ناول کا، تو اس کا کردار اور اس کے خاندان کے افراد کے جو کردار ہیں وہ یقیناً بےحد اہم علامتی اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کے مختلف جہتیں ہیں میر نہال کی شخصیت کی، آپ کو پتہ ہے جس کو رائٹر نے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو مینلی اس کا وہ جو کھوکھلا پن ہے اس کو رائٹر ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ ڈیٹریریٹ ہوا اور کس طرح سے یہ ڈکلائن اور ڈکے جو ہے ان کی قسمت ٹھہری مسلمان خاندانوں کی، مسلمان فیملیز کی، کمیونٹی کی اوور آل. Dear students, then this incident of the cat just destroying the pigeons in the absence of Mir Nihal is also very symbolic in the novel. This was also the most symbolic event of the novel, that a cat kills many of Mir Nihal's pigeons, and Coppola, a very famous critic and translator of Ahmad Ali,
who wrote many articles on Twilight and Delhi, sees in it a potent symbol Ali has used repeatedly in his short stories to represent cunning, stealth, and destruction, the symbol of cat he is talking about. He also identifies the cat with the British, who have succeeded in altering, if not destroying, these cherished ways of life by introducing new ideologies and modes which Mir Nihal's generation stands for. तो बिल्ली को एक डिस्ट्रॉयर के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है और सिमुलेट करने की कोशिश की गई है ब्रिटिश एम्पीरियलिस्ट रूलर्स के साथ भी। तो ये छोटा सा वाक़ा आपको पता है उसकी ज़िंदगी को तब्दील करता है, मीर निहाल की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। तो ये बेटे इस सिंबल पर भी हमें जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है कि बिल्ली को किस तरह से जो है वो एक डिस्ट्रॉयर एजेंट ऑफ आउटवर्ड फोर्सेस जो है वो यूज़ किया गया है। Dear students, then there are some other incidents attached to Mir Nihal and his family which have been presented here in the novel symbolically, metaphorically. Mir Nihal's paralysis has highly symbolical meaning. It represents a parting away of old order or the end of the old orthodox beliefs. His days were done and beauty had vanished from the earth. But life remained over which man had no command and must go on. His world had fallen to pieces all around him, smothered by indifference and death. Yet he was still alive to mope like an owl and count his days at the mercy of time and fate. The whole gloomy picture of Mir Nihal's paralyzed condition also shows his authority or a rule's end. His soul or inward condition is totally shattered. His dominating figure and his grandeur is scattered altogether. Begum Nihal's blindness also shows her lack of comprehension in maintaining or in making proper decisions. Her blindness also shows the blindness of that age women who were unable to manage the affairs of their houses. तो बेटे ये मीर निहाल और उसकी ख़ानदान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए कुछ और दीगर छोटे छोटे वाक़यात, मेजर वाक़यात कुछ और कुछ छोटे छोटे वाक़यात जो टर्निंग पॉइंट बनते हैं सिंबॉलिकली कहानी के अंदर, उनका ज़िक्र यहाँ किया गया है। ख़ुसूसन उसकी जो पैरालाइज्ड कंडीशन है मीर निहाल की, उसको सिंबल के तौर पर यूज़ किया है राइटर ने, आपको पता है। और इसी तरह जो है वो बेगम निहाल की जो ब्लाइंडनेस है वो पहले ही आपको पता है अपने शौहर की किसी बाहर की सरगर्मी से वाकफ़ नहीं है बेचारी, कि उसका शौहर जो है बाहर क्या करतूतें करता फिरता है और रात को वो बबन जान के पास जाता है। और जब आपको पता है वो घर की नौकरानी जो है वो उसके साथ उसके लिजिटिमेट रिलेशंस हैं और ये बेगम निहाल जो है इस हद तक ब्लाइंडनेस का शिकार है कि इसे ये नहीं पता चलता कि ये इस प्रेगनेंसी की जो वजह है वो मेरा शौहर नामुराद है। तो बहरहाल ये बेटे ये छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें इनको जो है वो राइटर ने बड़ी खूबसूरती से सिंबॉलिक क्लोथिंग के साथ अपने हिडन मैसेज जो है, हिडन मीनिंग जो हैं वो रीडर्स तक जो है वो कन्वे किए हैं। Dear students, then the house of Mir Nihal, the Haveli, is also a symbol in the novel. It is divided into two parts, as you know, Zanana and Mardana. Zanana is fixed for women. It is important to note that when illness of a family member becomes critical, he is moved to Zanana part of the house, where he or she is cared by women. Ironically, these women who were being deprived from their rightful shares cared for their dear ones in hard days of life. Men feel consolation in the hands of women. Mehru is symbol of helplessness, whose marriage is a blunder. Bilqis' character shows that women become slaves rather after marriage, and they can do nothing but to spend a miserable life within the four walls of the house. बेटे मीर निहाल का घर जो है वो बहुत ज़बरदस्त सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। जैसे आपको पता है ज़नाना और मर्दाना दो हिस्सों में
تقسیم شدہ یہ حویلی نما محل نما گھر جو ہے یہ اپنے اندر سمبولک میننگ سموئے ہوئے ہے. زنانہ حصہ جو ہے جہاں ایک طرف جو ہے یہ خواتین کے لیے ایک لائف امپریزنمنٹ کا سمبل ہے. دے ہیو گاٹ نو فریڈم آف موومنٹ, دے ہیو گاٹ نو فریڈم آف تھاٹ, نو فریڈم آف اوپینین. دے آر پلئنگ دا سیکنڈ فیڈل role in the scheme of the family life, whereas Mardana, is the part that stands for supremacy, sovereignty, authority, the portion of living for men. مردانہ جو ہے اس حصے میں مرد ہیں تو یہ اتھارٹی کا سمبل بھی ہے. گھر کے مین فیصلے جو ہیں یہاں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے, آوارگی کی, گھومنے پھرنے کی. آوارگی مطلب سوری میں نے لفظ جو ہے ذرا سخت استعمال کر لیا ہے. یہ مرد حضرات آپ کو پتہ ہے سارے جو ہیں یہ گھر چونکہ ایک سمبل ہے تو اس کے سارے جو ہیں وہ رات کو جیسے ہی شام ڈلتی ہے تو یہ سب جو ہے اپنی اپنی محبوباؤں کے کوٹھوں کی طرف جو ہے وہ چل نکلتے ہیں بغیر اپنی خواتین کو انفارم کیے ہوئے, جو کہ دوسرے حصے میں گھر کے دوسرے حصے میں جو کہ ساتھ اٹیچ ہے زنانہ اس میں بیچاری قید ہیں. تو خواتین جو ہیں ایک طرف تو یہ سمبل ہیں سپریشن کا, سپریشن ایٹ دا ہینڈز آف دا میل ڈومیننٹ سوسائٹی. تو احمد علی یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ دس از اے سوسائٹی دیٹ از اے بیسیکلی اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی. ویمن پلے اے سیکنڈ فیڈل ٹو دیئر مین فوک. تو دوسرے بیٹے یہ ایک آئرنک اس کی بات یہ ہے کہ جب یہ مرد بیمار ہوتے ہیں تو ان کی چارپائیاں جو ہیں پھر شفٹ کر کے زنانہ حصے میں لے جاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ وہاں جو ہے وہ ان کو زیادہ کنسولیشن جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ ان کی زیادہ اچھی نگرانی اچھی کیئر کر سکیں. تو اٹ از ویری سمبولک اگین. تو اسی طرح سے جیسے بلقیس کا کردار ہے بیچاری, وہ جیسے ہی اس گھر کی چار دیواری میں داخل ہوتی ہے تو ویسے پہلے جو خواتین ہیں وہ بھی بیچاری مجبور محض ہیں, تو یہ آ کر اور بھی مجبور محض والا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اٹ از آلسو ویری آئرینیکل دیٹ دیز ویمن لیونگ ود ان دا فور walls of that house are unaware of the illegitimate relations and loiterings and roamings of their men folk, the activities rather of their life outside that building. Dear students, the main character of Mir Nihal is the major symbol in the novel, as we have already discussed in detail here and there. The most important symbol of the novel is attached to the character of Mir Nihal. We see a prosperous Mir Nihal in the start of the novel. He is living a happy life along with his family. Mir Nihal is not only the representative of a class but also a symbol of life. Whole story of the novel revolves around Mir Nihal and his family. The story ends with the paralyzed condition of this main character, which shows that Muslim culture has also been paralyzed. Similarly, pigeon flying and kite flying show the customs of a society, which at the end of the novel can no more be seen. Mir Nihal is also a symbol of old generation who resisted change. They didn't accept change easily as compared to new generation. They try to defend their culture, but their carelessness ruined it. They resisted, but it was too late. Thus, the character of Mir Nihal is symbolized by the writer to indicate different aspects of life. The incident related to pigeons when a cat attacks while the cage remains unlocked symbolizes that the Muslims are not caring about their values. They are not protecting their culture. Cat is a symbol of British people, whereas pigeons are symbols of Muslim culture. The high-handedness of the British, their strength, and the weakness and meekness of the Muslims on the other side in shape of pigeons. Cat's attack on the pigeons in real meanings is attack on Muslim culture. Mir Nihal at the end of the novel sees no more kites on the sky. It clearly shows that the people have lost their identities. No one is interested in renewing his culture. Mir Nihal, although does not say anything, yet he understands that the things have been shattered, rattled, everything has gone to dogs.
بیٹے یہ اس کا مرکزی کردار میر نہال کا، جیسے اس کی مختلف جہتیں ہیں، یہ ڈیکے کا سمبل بھی ہے، لائف کا سمبل بھی ہے بذات خود کہ زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور اس کی زندگی کے ساتھ جو اٹیچ انسیڈنٹس ہیں، واقعات ہیں، ہیپننگز ہیں، سٹوری لائن ہے، وہ بھی بیٹے آلموسٹ سارے جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے سمبولک ہیں. اس کا جیسے ببن جان کے پاس جانا جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا سمبل ہے، پھر وہ کیٹس کا حملہ، پیجنز کا ختم ہو جانا، اس کی کائٹ فلائنگ کی وہ ہیبٹ کا جو ہے وہ ختم ہو جانا، اس کی جسمانی طاقت کا ختم ہونا ان شیپ آف اے ڈیزیز. تو یہ بیٹے سارے جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ سمبل ہیں جو اس کریکٹر کے تھرو جو ہے وہ رائٹر نے ہم تک جو ہے وہ کنوے کیے ہیں. Dear students, apart from the major and some other symbols discussed along with this question, there are many other symbols in the storyline. The writer depicts fakirs, peerjis, poets, beggars, Maulvis, and other minor characters here and there. The hawkers, the vendors are all have got their symbolic significance. They symbolize for superstitious beliefs mainly. People believe on beggars and fakirs more than their religion. They believe that amulets can cure their diseases. Beggars scolding indicates the worst future for them. بدعائیں جب وہ فقیر کی ہیں، فقیر کی بدعا نہ لینا بھائی، یہ برباد ہو جاؤ گے. یہ سارے سپرسٹیشیس بلیوز، وہ تعویذ پہننا، ایسے ایمولیٹس. Similarly, Ott's hoot symbolizes for downfall. Qawwali is a symbol of enthusiasm, mysticism. The word twilight is also a symbol. The profession of alchemy symbolizes for wastage of time and money. In fact, Ahmad Ali tried to put symbol in each and every object here. Symbolically, every word refers to something and has a deeper meaning in the whole context of the story in this novel. Dear students, coming to the final word of this critical question, we may say that Ahmad Ali is the master of technique of symbolism. He shows how to use it, when to use it, and where to put it. In short, the whole novel is a symbol of life. There is an element of universality in it because of the technique of symbolism, due to which Muhammad Hassan Askari, a famous writer of Urdu criticism, puts in one of his essays, critical essays about this novel, Twilight in Delhi. He says, this novel does not remain the story of Delhi alone, but is simultaneously the story of the life of mankind. When we finish the book, the center of our tragic sense is not only Delhi, but life itself. Ahmad Ali's Twilight in Delhi is regarded as a masterpiece. His writing is immensely visual. He wants to create a world which is real, vivid, and close to the actual traditional ways of old Delhi. Throughout the whole novel, symbolical elements are exploited vehemently. His direct and indirect way of using symbolism is very unique in Pakistani literature. He wanted to go beyond subcontinental sounds and words to convey the essence of traditional Indo-Muslim culture, in which poetry plays a pivotal role. The poetry, the use of Urdu words, and the art of narration all are really remarkable here in this novel. تو بیٹے جہاں تک سمبولزم کے استعمال کی بات ہے اس ناول میں، تو رائٹر نے مختلف کرداروں کو، مختلف واقعات کو، مختلف فزیکل آبجیکٹس کو، گلیوں کو، بازاروں کو، انوائرنمنٹ کو، ایٹماسفیئر کو سمبل کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنا وہ جو میسیج ہے، مختلف میسیجز جو ہیں، تھیمز جو ہیں اس کے کہانی کے، ناول کے، وہ ہم تک پڑھنے والوں کی حیثیت سے ہم تک کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تو بیٹے یہ جو سمبولزم کے لبادے میں اس نے بہت کچھ کہہ دیا ہے جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا ابھی ابتدائی طور پر، لیکن اس نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیپر میننگ جو ہیں ناول کو دیے جائیں. یہ اگرچہ ایک ابتدائی تحریر ہے،
हमारी बिगनिंग ऑफ नॉवल एंड फिक्शन, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर जो है वो गहराई मौजूद है कि आप इसको किसी भी दुनिया की बड़ी तहरीर से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। और बड़े दुनिया के राइटर्स उस ज़माने के E.M. फॉस्टर जैसे, वो भी इसकी तहरीरों से, इसकी तहरीर की गहराई से जो हैं, इसकी सिंबोलिज़म की गहराई से जो मुतासर नज़र आते हैं। तो ये बेटे हमारा आज का मौजू। Thank you very much, dear students. Till the next session and the next critical question of ours, it is Allah Hafiz. Thank you very much again.